General Qamar Bajwa was rather busy during his 6-year tenure and didn't get much time to air his views. After all, army chiefs do not give interviews or interact with journalists the way politicians do. Now, after retiring, he seems to have time to spare, not just to talk, but also for chance encounters with journalists, some imagined, some real. So much has been said and so much denied that it is easier to apologize in advance for commenting here on any particular incident which has been or may be denied in the future. But, for a moment, if we assume the journalists were not simply dreaming of speaking to a retired general the way men fantasize about chatting with Deepika Padukone, then it is interesting to note what he was asked about and what he wants to speak on. It seems there was little in our recent army chief's military career which was related to professional matters. It is an intriguing thought that, for a military which has fought a hard war against militancy for over a decade, none of us have any questions about it and nor do the generals have much to say. Is it because some of us were so removed from the battle scene that we know little about it? Or because the more high-profile uniformed ones are generally known more for the shadow they cast on the political realm than the battleground they may have fought on? General B is not the only one. If I ever got the chance to talk to any of the key military officers who are serving or have served, I, too, would like to ask questions of the siyasi kind. Be that as it may, let's return to General B, who is in the mood to talk. It seems he feels he owes his side of the story to the people and he owes it now. He doesn't want to wait and, say, write a book. He wants to tell his story, and it is a story in which he carries little blame. If even the military men didn't know the full picture, who really did? The earlier accounts, a more neutral word than interview, aim to tell the story of a well-intentioned man who brought a new party to power because he thought it would be good for the country, but then was disappointed in his choice and dumped it faster than DiCaprio dumps his girlfriends. In this account, Imran Khan is simply incapable of ruling, for reasons ranging from his choice of people, to the corruption of those around him, to his blunders on the diplomatic front. But it can also be read as a mea culpa of the management of the political system by the country's most powerful institution. It manages politicians, from their appearances in courts, to their imprisonments and their bails, to their alliances. And through these politicians, all else gets controlled. General B gave an NRO, saving Khan from disqualification, though not Jahangir Tareen. Khan wanted the PDM broken, so Faiz offered relief to Asif Ali Zardari in his court cases and the deed was done. MQM wanted to leave the PTI government and it sought the permission of General B, and he nodded. When Khan offended a foreign government, the damage control was done not by the government or the Foreign Office, FO, but the chief. Eventually, Khan was sent outside the classroom. The general was left with no choice, but the silly people on Twitter don't get it. The question is not why the politicians don't stand up, but why so much power should lie with the other side. But then came the second set of revelations, which was denied faster than the imposition of Section 144 in a Pakistani city. In this account, the story was of a good man kept out of the loop on so much. For instance, General B didn't realize Hamza Shahbaz was going to be Punjab Chief Minister till he was elected, which is when he told off the Prime Minister. This was confusing because Hamza was the possible candidate for all those days the Battle of Punjab was being fought. The poor man got the vote twice, first in a hotel, and then the Assembly. Our former chief, in charge of all that is political, defense-related and foreign, didn't find out till after it was over. It seems the men under him were running around, doing all kinds of illegal stuff and he never really told them off, like he did Shahbaz Sharif for nepotism. These men got journalists thrown out of jobs, forcibly entered politicians' rooms, and the big B could only clean up the mess later. For some odd reason, these interviews reminded me of an incident a few years ago, when a retired military officer claimed the Juniper map recovered from the MQM offices was the #fake news of the 1990s. It began a new heated debate on channels, with retired men arguing furiously over what happened. Was there a map or not, till, eventually, one of them said there were wheels within wheels. Watching this exchange, I was stunned.
If even the military men didn't know the full picture because of the wheels within, who really did? Ya to hum jaisi hi nikle, they've turned out to be like us. All these revelations, then and now, tarnish little by little the image of the security establishment as a well-oiled machine, where every cog works in sync with the other. After all, this perception of an efficient machine is what creates the preference for it over noisy, disorganized politicians. For long periods, the choice for us was not between parties, but parties and the other option. The past few years, in which the institution seems to be full of men going their own sweet way, and where decisions are abruptly made and changed, will have a far more far-reaching effect than anyone realizes. Be it the fear or sense of superiority which institutions or people wield, it is dependent on perceptions just as much as hard power. If the first weakens, the second is harder to sustain. The writer is a journalist. Published in Dawn, March 28, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/it. जनरल कमर जावेद बाजवा अपने 6 साला दौर हुकूमत में मसरूफ थे और उन्हें अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिला। बहरहाल, आर्मी चीफ सहाफ़ियों को इंटरव्यू नहीं देते और न ही उनसे इस तरह बातचीत करते हैं जिस तरह सियासतदान करते हैं। अब, रिटायरमेंट के बाद, ऐसा लगता है कि उनके पास वक्त बचा है। न सिर्फ बात करने के लिए, बल्कि सहाफ़ियों के साथ इत्तेफाकी मुलाकातों के लिए भी, कुछ तसव्वुराती, कुछ हकीकी। बहुत कुछ कहा गया है और इससे इतना इनकार किया गया है कि किसी खास वाक़या पर तबसरा करने के लिए पेशगी मुआफ़ी मांगना आसान है जिससे मुस्तक़बिल में इनकार किया गया है या किया जा सकता है। लेकिन, एक लम्हे के लिए, अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि सहाफ़ी किसी रिटायर्ड जनरल से इस तरह बात करने का ख्वाब नहीं देख रहे थे जिस तरह मर्द दीपिका पादुकोण के साथ बातचीत के बारे में सोचते हैं, तो ये देखना दिलचस्प है कि उनसे किस बारे में पूछा गया था और वो किस बारे में बात करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे हालिया आर्मी चीफ के फ़ौजी करियर में बहुत कम ऐसा था जो पेशा वराना मामलात से मुताल्लिक था। ये एक दिलचस्प ख्याल है कि एक दहाई से ज़्यादा अरसे से अस्करियत पसंदी के खिलाफ सख्त जंग लड़ने वाली फ़ौज के लिए हम में से किसी को भी इसके बारे में कोई सवाल नहीं है और न ही जर्नेलों के पास कहने के लिए कुछ है। क्या उसकी वजह यह है कि हम में से कुछ जंग के मंजर से इतने दूर थे कि हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं? इसलिए कि ज़्यादा हाई प्रोफाइल वर्दी में मलबूस लोग आम तौर पर इस मैदान जंग के मुकाबले में सियासी मैदान पर पड़ने वाले साए की वजह से ज़्यादा जाने जाते हैं। जनरल बी अकेला नहीं है। अगर मुझे कभी इन अहम फ़ौजी अफसरान से बात करने का मौका मिला जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, ये खिदमात अंजाम दे चुके हैं, तो मैं भी सियासी नौयत के सवालात पूछना चाहूँगा। बहरहाल, आइए जनरल बी की तरफ लूटते हैं, जो बात करने के मोड में हैं। ऐसा लगता है कि वो महसूस करते हैं कि वो इस कहानी का अपना हिस्सा लोगों के शुक्रगुजार हैं और अब वो इसके जिम्मेदार हैं। वो इंतज़ार नहीं करना चाहता और एक किताब लिखना चाहता है। वो अपनी कहानी सुनाना चाहता है और ये एक ऐसी कहानी है जिसमें वो बहुत कम इल्ज़ाम लगाता है। अगर फ़ौज के जवानों को भी पूरी तस्वीर का इल्म नहीं था, तो वाकई किसने किया? इंटरव्यू से ज़्यादा गैर जानिबदारीना बयान करने का मकसद एक नेक नियत शख्स की कहानी बयान करना है जो एक नई पार्टी को इक़्तिदार में लाया क्योंकि इसका ख्याल था कि यह मुल्क के लिए अच्छा होगा। लेकिन फिर वो अपने इंतखाब से मायूस हुआ और डीकैप्रियो ने अपनी गर्लफ्रेंड्स को छोड़ने से कहीं ज़्यादा तेज़ी से इसे फेंक दिया। इस लिहाज से देखा जाए तो इमरान खान सिर्फ हुकूमत करने से कासिर हैं, जिसकी वजूहात उनके लोगों के इंतखाब से लेकर अपने आसपास के लोगों की करप्शन और सिफारती महाज पर उनकी गलतियों तक हैं। लेकिन इसे मुल्क के सबसे ताकतवर इदारे के जरिए सियासी निज़ाम के नज़्म व नसक के बारे में एक MBA कल्पा के तौर पर भी पढ़ा जा सकता है। ये सियासतदानों का इंतज़ाम करता है, अदालतों में उनकी पेशी से लेकर उनकी कैद और उनकी ज़मानतों तक, उनके इत्तेहाद तक। और इन सियासतदानों के जरिए बाकी सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। जनरल बी ने NRO देकर इमरान खान को नाअहली से बचाया, हालांकि जहांगीर तरीन नहीं। इमरान खान चाहते थे कि PDM टूट जाए,
इसलिए फैज ने आसिफ अली जरदारी को उनके अदालती मुकदमात में रिलीफ की पेशकश की और ये कारनामा अंजाम दिया गया। MQMPTI की हुकूमत छोड़ना चाहती थी और उसने जनरल बी से इजाजत तलब की और उन्होंने सर हिलाया। जब खान ने किसी गैर मुल्की हुकूमत को नाराज किया तो नुकसान पर काबू पाने का काम हुकूमत दफ्तर खारजा FO ने नहीं बल्कि चीफ ने किया। आखिरकार खान को क्लास रूम के बाहर भेज दिया गया। जनरल के पास कोई चारा नहीं बचा था, लेकिन ट्विटर पर अहमक लोगों को ये समझ में नहीं आया। सवाल ये नहीं है कि सियासतदान क्यों खड़े नहीं होते, बल्कि सवाल ये है कि इतनी ताकत दूसरी तरफ क्यों होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद इंकिशाफात का दूसरा मजमुआ सामने आया, जिसे पाकिस्तानी शहर में दफा 144 के नफाज से भी ज्यादा तेजी से मुस्तरद कर दिया गया। इस कहानी में एक अच्छे आदमी की कहानी थी जिसे बहुत कुछ लेकर इससे दूर रखा गया था। मिसाल के तौर पर जनरल बी को इस बात का एहसास नहीं था कि हमजा शहबाज मुंतखब होने तक पंजाब के वजीर आला बनने जा रहे हैं। ये बात उलझन का बाइस थी, क्योंकि हमजा इन तमाम दिनों के मुमकिना उम्मीदवार थे जो पंजाब की जंग लड़ी जा रही थी। इस गरीब आदमी को 2 बार वोट मिला, पहले होटल में और फिर असेंबली में। हमारे साबिक सरबराह, जो सियासी, दिफाई और खारजा उमूर के इंचार्ज थे, को इसके खत्म होने तक पता नहीं चला। ऐसा लगता है कि उनके मातहत लोग इधर उधर भाग रहे थे, हर तरह का गैर कानूनी काम कर रहे थे और उन्होंने उन्हें कभी नहीं बताया, जैसा कि उन्होंने अकरबा परवरी के लिए शहबाज शरीफ के साथ किया था। इन लोगों ने सहाफियों को नौकरियों से निकाल दिया, जबरदस्ती सियासतदानों के कमरों में घुस गए और बिग बी बाद में ही गंदगी साफ कर सके। किसी अजीबो गरीब वजह से इन इंटरव्यूज ने मुझे चंद साल पहले का एक वाकया याद दिला दिया, जब एक रिटायर्ड फौजी अफसर ने दावा किया था कि MQM के दफातर से बरामद होने वाला जिनापुर का नक्शा 1990 की दहाई का है। उसने चैनलों पर एक नई गर्मा गर्म बहस का आगाज किया, जिसमें रिटायर्ड अफराद ने जो कुछ हुआ इस पर गुस्से से बहस की। कोई नक्शा था या नहीं। आखिरकार इनमें से एक ने कहा कि पहियों के अंदर पहिए हैं। इस तबादले को देखकर मैं दंग रह गया। अगर फौज के जवानों को भी अंदर के पहियों की वजह से पूरी तस्वीर का इल्म नहीं था, तो वाकई किसने किया? ये तो हम जैसे ही निकले, वो हमारे जैसे बन गए हैं। इस वक्त और अब के इन तमाम इंकिशाफात से सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की इमेज आहिस्ता आहिस्ता खराब होती जा रही है, जहां हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। बहरहाल, एक मुअस्सर मशीन का यह तस्वुर ही शोर मचाने वाले गैर मुनज़्ज़म सियासतदानों पर उसे तरजीह देता है। तवील अरसे तक हमारे लिए इंतखाब पार्टियों के दरमियान नहीं था, बल्कि पार्टियों और दूसरे ऑप्शन के दरमियान था। गुज़िश्ता चंद सालों में, जिसमें यह इदारा मर्दों से भरा हुआ नजर आता है और जहां अचानक फैसले किए जाते हैं और तब्दील किए जाते हैं, इसके इससे कहीं ज्यादा दूर रस असरात मुरतब होंगे जितना किसी को एहसास है। चाहे वो खौफ हो या बरतरी का एहसास जो इदारों और लोगों का इस्तेमाल होता है, इसका इन्हिसार तस्वुरात पर होता है जितना कि सख्त ताकत पर। अगर पहला कमजोर हो जाता है तो दूसरा बरकरार रखना मुश्किल है। मजमून निगार एक सहाफी हैं। अखज़ शुदा बतारीख 28 मार्च 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.